जय माता दी आदेश। नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। वेलकम टू द इवनिंग सेशन ऑफ मार्केट एनालिसिस। मेरा नाम है विशाल एंड दिस इज 602nd episode of daily life market analysis. So today we are going to have a look at the global markets, Nifty, Bank Nifty, stocks, commodities, Forex, and towards the end of the session we will take stock queries, as many as possible. So good evening, namaskar. चैनल को दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड यू कैन ऑल्सो follow us on Instagram and Telegram group. Good evening. All right. Okay, and let me update you guys that the next training is scheduled on August 13th and 14th, and we will be covering a lot of topics from price action, technicals, and pro trader setups. And a little bit of revision has been done in the content and the way things are presented. We are back to 2 days of training. I tried to conduct training in a 1 day format, but it did not work, so I had to I have to take the second day for the previous batch, which will be done in next week. So as usual, we are back to the 2 day format because the content is quite huge, so it is not possible to cover in 1 day. So I'm back with that. Telegram group support will be there for 3 months. Charges are revised. So if you are interested, you are welcome. You can join this training, and if you register as soon as possible, we will make the charges the old one. Okay, so try to join as soon as possible before 31st of July. If you join, it will be the old charges, which is 20,000, and post that, henceforth from the month of August, charges will be 25. So with this, let us start today's session. So today was a very simple day, very easy day. We were on the short side of the market. कल मैंने एक्सप्लेन किया था कि आज का जो बायस है, आज प्रॉफिट बुकिंग होना चाहिए मार्केट में। आज जो है एक गिरावट होनी चाहिए। यूरो डॉलर पैरिटी के बारे में हमने कल बात किया था, एंड टुडे वी गॉट अ गुड ट्रेड इन फॉरेक्स मार्केट ऑल्सो. So let us start today's session. So right now I can see global markets are pretty much flat, I would say. European markets थोड़ा सा positive है, but nothing big happening as of now. And US मार्केट में 3920 का जो रेजिस्टेंस लिया है S&P 500 ने, उसके वजह से थोड़ा सा डिक्लाइन है. एंड जब तक 3920 इसमें क्रॉस नहीं होगा, मार्केट विल बी अंडर प्रेशर. इफ इट कम्स बैक अगेन नियर 3740, 3720, इफ इट कम्स हियर अगेन वी विल बाय, और वी विल बाय द ब्रेकआउट. सो दिस इज द ट्रेडिंग रेंज 3920 से लेके 3720. Either side way you will get the next big breakout. As per the weekly chart, even if we come at 3720, most likely we are heading upwards. Okay, so this is the view going forward in the S&P 500. 3920 के ऊपर या तो ब्रेकआउट बाय करना चाहिए, या तब तक मार्केट से दूर रहो, या मे बी साइडवेज मार्केट है तो आप दोनों साइड के ट्रेड्स, लॉन्ग शॉर्ट दोनों साइड के ट्रेड्स आप प्ले कर सकते हैं. ओवरऑल कोई मेजर बेरिश व्यू नहीं है इस समय मार्केट पे, बट यस, सम करेक्शंस आर लाइकली टू हैपन. European markets are bouncing a little bit, but they are close to their Feb month low, which was formed when the Russian invasion of Ukraine started. Let's talk about the currencies first, because everything is now dependent on how the dollar behaves at this all-time high, and how the euro behaves at a 20-year low. So today the euro dollar has reached parity का मतलब है कि $1 $1 जो है एक समान है. And this has never happened. This is happening for the first time. So definitely that must have triggered some big stop losses of hedge funds, of institutions, क्योंकि बहुत सारी जो structured derivative products हैं, they are devised keeping in mind all these things. So when the parity hits, definitely some chaos must have happened, and as a result of which the euro saw a good decline. So as of now today,
जैसा कल हमने डिस्कस किया था कि आई एम एक्सपेक्टिंग द डॉलर टू बी बेरिश टुडे, आई एम एक्सपेक्टिंग द यूरो टू बी बुलिश टुडे। सो आज यूरो में आफ्टरनून में डिक्लाइन था, एंड देन इवनिंग सेशन के बाद से जो है एक अप मूव देखने को मिल रहा है। So if I check the chart of dollar, so it is reacting pretty nicely. I would say this is the rising wedge structure that we have been talking about. This is the overthrow move. Still, it needs to completely break below this structure for any kind of a bearishness to come. If it doesn't break down, then what will happen is again it will gain renewed strength, and this will bring more tension in the markets, because the people who are shorting US dollar now, they are in trouble. So if this doesn't move lower, what will happen is the dollar short trade will itself witness a massive short covering, and that will completely make everything very very volatile. And possibly in that course of action, what can happen is the dollar probably peaks out in that heightened volatility, or maybe in a very messed up situation. सो इसलिए डॉलर को नीचे जाना चाहिए। मेरा व्यू ये है कि अभी एक दो दिन हमें देखना चाहिए इसमें से कंक्लूसिवली, तभी हम कुछ कह सकते हैं। बट आई थिंक देर इज अ गुड चांस इट शुड स्टार्ट टू गो lower. Okay, so maybe next 2 days I think they are enough. And I think tomorrow we will have the US CPI data also. I think that will be the uh, catalyst, and that will decide the trajectory of US dollar. अगर मैं और हायर टाइम फ्रेम के चार्ट्स देखूं, इफ आई लुक एट द वीकली चार्ट, देन यस, देर इज स्टिल सम स्कोप, okay, on the dollar index chart, there is still scope to test this line. So हो सकता है कि कल के डेटा के समय यूएस डॉलर जो है एक बार इन एक्सट्रीम volatility it uh, takes out this area, and then probably the reversal happens. If you see, this is a very strong zone. So every time it has taken some sort of resistance at this line, and we are inching very close to that. So this is the potential reversal zone. I would say this is not a potential, this is a very high probability reversal zone, and some upside can come, but this is a good reversal zone on the US dollar. चलिए अब यूरो की बात करते हैं। तो यूरो जो है दोस्तों, आज इंट्रा डे रिकवरी जो है अच्छी हो रही है। यू कैन सी एज सुन एज इट हिट दिस लेवल, इट हैज स्टेज्ड अ वेरी नाइस कम बैक एज ऑफ नाउ। हालांकि ये कम बैक सिर्फ बहुत ही छोटा मोटा कम बैक है, लाइक इट डजंट चेंज एनीथिंग। बट yesterday we had discussed about this line, this area, and this was exactly our area to go long, और हमने आज वही किया। आज हमें जो है बहुत ही अच्छा मौका मिला, and we bought euro INR exactly at the bottom, literally at the bottom, and it shot up like a rocket। 50 पैसे का गेंस जो है इंट्रा डे इटसेल्फ आज ही हो गया। so that was a wonderful trade, and I would still maintain that trade tomorrow also, because I think कल भी हमें यूरो INR में स्ट्रेंथ दिखेगा। जब तक ये आज का लेवल ब्रेक नहीं करता, आई विल बी बायर इन द यूरो INR। इट इज ट्रेडिंग एट एक्सट्रीम लेवल, and we have got some very good price, attractive prices हैं। so we should capitalize on this opportunity। 79.5 का एक स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। ब्रिटिश पाउंड की अगर हम बात करें, तो इसमें भी आज बहुत ही अच्छी एक स्ट्रेंथ हमें देखने को मिला, स्पेशली in the late European session। so even this has bounced very nicely, pretty nicely। and the thing is, once we tomorrow, if we can cross today's high, that will be a wonderful, very, very great setup. Why? Because you see, this is a very identical double bottom structure, and we saw a massive decline in yesterday's session, getting continued in today's session. But then we spike up, we break above these two bottoms and manage to close. So if we can go above this entire setup becomes a double bottom failure, right? And that is a best setup to take a long trade. So you should buy somewhere here. Okay, in all these areas you can buy, and the target will be, bare minimum will be to take out the high of the swing. So the target will be somewhere towards the 21-day moving average. There is a very thin green line that is coming, and every time this candle touches that green line, there is a big sell off that starts. So it happened here, it happened here, it has happened here also.
So that line will be our target. ठीक है. सो वी आर बुलिश ऑन जीबीपी आईएनआर, बट कल अभी कोई ट्रेड मैंने रिकमेंड नहीं किया. मोस्टली मैं कल जो है ट्रेड दूंगा. यूएसडी जेपीवाई की बात करेंगे तो इसमें एक अच्छा हाई लगा है 137.75 और रफली से 138, एंड टुडे इट इज विटनेसिंग सम सैचुरेशन. इसमें एक एग्जॉशन मुझे दिखाई दे रहा है दोस्तों. सो वी नीड टू बी केयरफुल इन दिस पेयर, एंड ऑल्सो this has not been performing up to the mark as compared to the US dollar. So recently US dollar में एक अच्छी strength देखने को मिली, but the USD JPY is not moving proportionately. So we should be very cautious over here, because अगर yen में एक weakness आता है तो ये फिर डॉलर में भी eventually somehow आ जाएगा, because yen will be a leading indicator of that stuff. सो अभी तो बुलिश है. अभी तो इसमें जब तक कि ये एक दो कैंडल के बॉटम को ब्रेक नहीं करेगा तब तक तो ये फुल ऑन बुलिश है. एंड वेरी वेल इट कैन मेक अ इनसाइड बार लाइक दिस, एंड शूट हायर 139. कोई इसमें बड़ी बात नहीं होगी. इनफैक्ट आइडियली 139 शुड कम बिफोर एनी टाइप ऑफ अ रिवर्सल. सो ये व्यूज है. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द इंडियन पेयर्स जो एनएससी फॉरेक्स पेयर्स हैं. तो सबसे पहले हम यूएसडी आईएनआर पेयर पे बात कर लेते हैं. सो वेरी क्लोजली टुवर्ड्स द 80 रुपीज मार्क. सो अभी भी बाय ऑन डिप है, इसमें कोई भी इसमें शंका नहीं होनी चाहिए. एंड फॉर टुमारोज सेशन वी कैन कंसिडर this breakout area, the area of around 79.5 as a buying level. Now keep in mind that 79.3 or 79.25 is a very very crucial level. 79.25 के नीचे अगर जाएगा तो I think there will be pressure on the USD/INR and it will drop further. So a good place to buy USD/INR will be somewhere 79.45 यहाँ पे. Okay, breakout retest with a stop loss of 79.25 for a target of 80. अगर ऊपर खुलता है तो कोई भी लॉन्ग ट्रेड नहीं लेना चाहिए, बिकॉज आरबीआई इज सिटिंग लाइक अ वॉचमैन ओवर देयर एंड इट विल डिफेंड द $80 मार्क. इनफैक्ट इसमें बहुत ही अब टाइट फाइट चल रहा है बिटवीन द स्पेकुलेटर्स एंड द आरबीआई. सो आई थिंक थोड़ा सा यूएसडी आईएनआर से अगर आप कॉशियसली ट्रेड करें तो ठीक है, नहीं तो फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसे ट्रेड करना. इजी पेयर्स दूसरे हैं, जैसे यूरो है. सो यूरो में माय व्यू फॉर टुमारो रिमेन्स बुलिश. आई थिंक वी हैव done a fantastic job. So today we bought euro literally at the bottom 79.85, and then it shot up very very nicely. So there is still a pending gap left in the euro, and I think that is the immediate target, which is around 80 rupees 55 paise, 80 rupees 60 paise. Now for tomorrow's session, again things will depend कि आपके जो स्पॉट में ये करेंसीज कैसे ट्रेड कर रहे हैं, लाइक यूरो पाउंड एंड येन स्पॉट में कैसे ट्रेड कर रहे हैं, उसके हिसाब से हमें जजमेंट लेना होगा. सो टुमारो मॉर्निंग अभी बहुत दूर है. अभी ऑलमोस्ट 10-11 आवर्स are there, so I don't know where they will trade. But एक आइडिया मैं देता हूँ कि uh, अगर बहुत ज़्यादा वीकनेस हमें ओवरनाइट नहीं दिखा यूरो स्पॉट में, देन वी शुड बी डेफिनेटली अ बायर टुमारो. तो इन दैट केस एनी डाउन मूव दैट कम्स समवेयर नियर 80 rupees, 80 becomes the psychological number, a round number. So any dip that comes near 80, वो हमें बाय करना चाहिए. 79.5 एक स्टॉप लॉस हम लेके चल सकते हैं, ओके, एज अ राउंड नंबर सॉर्ट ऑफ थिंग. and the target will be this level, which is around 80.6. ये फर्स्ट टारगेट होगा टू कंप्लीट द गैप. एंड अगर सारी चीज़ें और स्ट्रांग है, स्ट्रेंथ है, देन डेफिनेटली जो ब्रेकडाउन एरिया है ऑफ 80.80 या 81 यहाँ तक का ये हमारा टारगेट होगा. सो प्रॉब्ली इट शुड ट्रेड इन दिस पर्टिकुलर मैनर. ओके, so this is the bottom one retest you can get, and here and then a move like this. Suppose अगर यूरो आईएनआर ऊपर खुलता है, गैप अप खुलता है, तो बहुत अच्छी बात है. बट ट्रबल एरिया ये है, यहाँ पे ध्यान देना 80.60 के आसपास. ओके, सो आप अपने लॉन्ग्स को एक बार बुक कर सकते हैं. एंड वॉच द 5 मिनट चार्ट. जैसे वी ऐप के नीचे आएगा एक बार पोजिशन को बुक करो, एग्जिट करो, एंड प्रॉब्ली यू कैन ट्राई शॉर्ट ऑल्सो. बट जो भी करना स्टॉप लॉस के साथ करना. सो टुमारो देर विल बी बिग मूव इन बोथ द पाउंड एंड द यूरो. कल बहुत इवेंट है, बहुत सारे डेटा आने वाले हैं यूरोप और यूके से. सो बी एक्सट्रीमली केयरफुल ऑन योर ट्रेड्स. देयर विल बी लॉट ऑफ वायलेंट मूव्स थ्रू आउट द डे.
ब्रिटिश पाउंड की अगर हम बात करें तो मुझे भी ये अट्रैक्टिव लग रहा है, इट इज लुकिंग वेरी नाइस टू मी, एंड फॉर टुमारो माय बायस इज बाय ऑन डिप. So if there is a gap up opening, okay, if there is a gap up opening and if you are holding any longs, तो पहले उसे ट्राई करेंगे बुक करने के लिए. If you are not holding any position, then you know this is the resistance that has been going on. So GBP INR में एक 95 is a psychological number, 95 is the resistance, massive resistance है 95. So any up move that comes, it will face resistance near 95, and from there it can again fall back towards 94.5. Okay, and that will be a very good level. So अगर ये ऊपर खुलता है तो try to book out or try to ride. If it is going higher on a 5 minute chart, you can use the VWAP to trail your trades, but 95 पे ध्यान देना, यहाँ पे जो है ट्रबल है. So longs को in any case यहाँ पे कट करना चाहिए. You can try a short trade also here, but stop loss जो है 95.3 होगा. That's the last stop loss, and target हो जाएगा 94.5, 94.4, जहाँ पे यहाँ पे जो है एक हाई कन्विक्शन लॉन्ग ट्रेड मेरे ख्याल से बनेगा. सो वी विल डेफिनेटली लाइक टू बाय इन दिस एरिया. स्टॉप लॉस हम 94 का लेके चलेंगे राउंड नंबर, एंड लेटर ऑन वी विल सी आफ्टर दिस. अगर जीबीपी में अच्छी एक रिकवरी होती है और जीबीपी 95 के ऊपर अगर क्लोज करता है तो इस ट्रेड को हमें रखना चाहिए, एंड दैट कैन बिकम अ बिग ट्रेड लेटर ऑन. ठीक है, सो दैट्स द व्यू फॉर द ब्रिटिश पाउंड एज ऑफ नाउ. थोड़ा डिफिकल्ट डिफिकल्ट मैं नहीं कहूँगा, आई वुड से कि कल डेटा बहुत है, सो यू नीड टू बी, यू नीड टू हैव सम एक्सपीरियंस. एक्चुअली कल का दिन जो है एक्सपीरियंस वालों के लिए, सो प्लीज बी केयरफुल. JPY INR में अगेन बेरिश व्यू है मेरा. सो वी विल अगेन शॉर्ट. आज भी मैंने शॉर्टिंग की एडवाइस दी थी कि ये जो गैप एरिया है यहाँ पे आता है तो आप शॉर्ट कर सकते हैं. सो कीप शॉर्टिंग दिस, नो इश्यूज एट ऑल. अभी 58.35 58.4 के आसपास है. सो और भी ऊपर जाएगा तो शॉर्ट कर सकते हैं, 58.6 तक शॉर्ट कर सकते हैं, 7 तक शॉर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. इसमें बस एक चीज ध्यान रखिए, 59 इज अवर लेवल. हम इसमें जो है ऑलमोस्ट 2-3 राउंड, छोटे छोटे राउंड हो चुके हैं इसमें. ओके, 3 राउंड हो चुके हैं, अब एक फोर्थ राउंड में लेट अस सी इफ दिस राउंड इज सक्सीडेड, then we will see the JPY-NR making a fresh new low below 57.5, and in that case the USD JPY would have touched 139. So एंड ऑल्सो पोजिशन साइजिंग को थोड़ा कम रखना है आने वाले 2 दिनों में, बिकॉज सम वायलेंट मूव्स विल हैपन इन द फॉरेक्स मार्केट. सो ट्रेड लेस and trade carefully. Next 2-3 days are going to be tricky for the forex market because of the euro dollar parity situation which is prevailing in the market. Okay, so that's all from the forex market front. Let's talk about the commodities. So commodities में आज कुछ है नहीं as such as of now. क्रूड में एक मैसिव डिक्लाइन हुआ है. सो क्रूड में जो है कल रात को आपको याद होगा कि मैंने एग्जिट करने को कह दिया था लॉन्ग्स को. आज काफी लोग ऊपर बाय करना चाहते थे, बट इसको जो है मैंने सही टाइम पे मना किया, एंड मैनी पीपल गॉट सेव्ड. नाउ राइट नाउ वी हैव गॉन लॉन्ग. ओके, 76-70 पे जो है ऑलमोस्ट लगभग कॉस्ट पे है, बट इट इज नॉट गोइंग हायर. सो वी विल वॉच टिल क्लोजिंग. अभी 45 मिनट्स है, एंड लेट अस सी अगर क्लोज होने तक 77, सॉरी 7800 या जस्ट अराउंड 7800 कोई भी प्रॉफिट मिलता है उसे जो आपको लॉक कर लेना चाहिए. ठीक है, बिकॉज टाइम इज वेरी लेस, एंड इफ इट स्टार्ट्स टू रन इट विल हिट मे बी 7800. 100 पॉइंट की छलांग क्रूड के लिए कोई बड़ी बात नहीं है. सो यू कैन लॉक योर प्रॉफिट्स एंड देन वी कैन ट्रेड टुमारो. सो what is the situation in crude oil right now? Let me just show you the chart कि यहाँ पे जो है क्यों हमने लॉन्ग की कोशिश की है या लॉन्ग की जुर्रत कैसे की है, हमने एक बार इसे डिस्कस कर लेते हैं. तो थोड़ा सा रिस्की है, बट इट्स अ हाई प्रोबेबिलिटी. सो एज यू कैन सी वी आर फॉलोइंग दिस पिचफॉर्क सिंस many years. So this is the last bottom over here, and this is a fantastic level right now. Okay, so हमने यहाँ से लास्ट टाइम लॉन्ग इनिशिएट किया था, आई मीन थोड़ा ऊपर से यहाँ कहीं से लॉन्ग इनिशिएट किया था, एंड देन वी शॉट अप वेरी नाइसली. ठीक है, सो ये एक बम्पर ट्रेड था. फिर कल के गिरावट पे हमने जो है वापस बाय किया, अगेन यहाँ पे गया, बहुत ही बढ़िया ट्रेड था, एंड टुडे इट हैज फॉलन बैक. सो दिस इज द प्लेस where two things can happen. Number one, it will either start to take off like this, और ये अगर कामयाब हुआ और $102 को क्रॉस कर लिया, देन आई थिंक क्रूड इज गोइंग ऑल द वे टिल 116, एंड दैट मीन्स कि फिर
जियोपॉलिटिकल सर्कल्स में कुछ न्यूज़ फिर ऐड हो रही है, ठीक है। सो दिस मूव, एंड आई थिंक समथिंग इज समथिंग इज कमिंग अप एंड दे आर trying to take out some buyers over here, because the way crude is shaping up, I think there is a further news or something that will come, and I think crude is getting ready for some kind of a blast on the higher side. So crude में एक चीज हमें ध्यान देना दोस्तों, लाइक बड़े टाइम फ्रेम पे $92 इज एवरीथिंग फॉर क्रूड। क्रूड जब तक $92 को डिफेंड कर रहा है, क्रूड में अभी भी सारी पॉसिबिलिटीज इंटैक्ट है। सो एज आई एम स्पीकिंग, क्रूड कैन डू इवन दिस जो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। सो क्रूड कैन डू इवन अ फॉलोइंग वेज पैटर्न लाइक दिस, go goes till like 92 93 somewhere over there, and then starts to take off in a big way। एक तो ये सिचुएशन है। दूसरा ये है कि probably from here it starts to take an up move, reach till 102, probably again come down, or if it crosses back, then it will be simply the double bottom structure at the pitchfork। Okay, so it will be something like this। सो ट्रिकी है मामला, बट रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही अमेजिंग है, इसीलिए ये ट्रेड हमने इस समय लिया है। एंड एज आई सेड, इट इज राइट नाउ एट कॉस्ट हाफ एन आवर 45 मिनट्स है क्लोजिंग को। कॉस्ट पे अगर क्लोज होगा तो बिल्कुल भी नहीं कैरी करना है, अगर ऊपर छलांग आता है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट्स बुक करके विल क्लोज, एंड कल हम फ्रेश देख लेंगे, ठीक है। वाई? बिकॉज ओवरनाइट यहाँ पे अगर ये गलती से टूट गया तो फिर ये काफ़ी नीचे 200-250 पॉइंट नीचे जो है कल गैप डाउन कर जाएगा, ठीक है। सो दैट इज़ द प्रॉब्लम। या एंड जो लोग अगर ऑप्शन से खेल रहे हैं तो प्लीज़ बी केयरफुल, क्योंकि अभी एक्सपायरी के लिए सिर्फ 2-4 दिन बचे हैं। सो दैट्स द थिंग, फाइन। सो ये एक अपडेट है क्रूड पे। बाकी किसी कमोडिटी में कोई खास व्यू नहीं है एज ऑफ नाउ। नेचुरल गैस में कल एक ट्रेड आपको बताया था मैंने कि 540 पे रेजिस्टेंस है, एंड इफ इट कम्स नियर 480 तो एक एग्रेसिव ट्रेड है 480 पे 462 के नीचे के एक स्टॉप लॉस के साथ। तो कुछ लोगों ने आई थिंक ये ट्रेड लिया, एंड इमीडिएटली इसमें जो एक बम्प आया। सो दिस वाज इन फैक्ट अ गुड ट्रेड। ये थोड़ा सा रिस्की था, बट अगर छोटे स्टॉप लॉस से अगर आप खेल सकते हो तो दिस वाज अ गुड ट्रेड। सो नाउ द थिंग इज, इफ यू हैव टेकन दिस ट्रेड, काइंडली क्लोज इट बिफोर द क्लोज, ओके, क्योंकि कल इसमें दोनों साइड की चाल आएगी, ठीक है। सो कीप दैट थिंग इन माइंड। कॉपर हैज ब्रोकन अ मेजर लेवल। सो कॉपर में कल आपको मैंने चेतावनी दिया था कि अगर आज ये नीचे जाना शुरू करता है तो कॉपर में प्लीज बी एक्सट्रीमली केयरफुल, क्योंकि कॉपर में जो कॉमिक्स का चार्ट है दैट इज लाइक बैडली ब्रोकन। ओके, सो कॉपर में बेरिशनेस अभी भी परसिस्ट कर रहा है। लास्ट थर्सडे या वेडनेसडे मैंने एक लॉन्ग ट्रेड यहाँ पे दिया था जो कि अच्छा चला था उस दिन, एंड देन इट स्टार्टेड टू डिक्लाइन। सो कुछ लोगों ने यहाँ पे अच्छी प्रॉफिट उस दिन करी थी। सो अभी कोई ट्रेड नहीं है, लेट्स वेट, we will see later on। Okay, no need to take any undue risk in these markets। एल्यूमिनियम हैज कम बैक टू 206, इसमें मुझे दिलचस्पी है, बट अभी मैं इसमें ट्रेड नहीं रेकमेंड करूंगा। आई डोंट लाइक such behavior where the price doesn't do anything and goes sideways, so this is not a sign of strength। ये एक ट्रैपिंग भी हो सकता है लॉन्गर्स का, एंड देन फाइनली इट कैपिचुलेट। सो इसमें अभी कोई ट्रेड नहीं है। हाँ, अगर भविष्य में ये चलना शुरू करता है तो फिर ये सपोर्ट वैलिडेट हो जाएगा, एंड देन वी विल बाय ऑन डिप। इस तरीके से हम ट्रेड करेंगे। एल्यूमिनियम में 260 रुपए का भाव जो है आ सकता है। सो ये एक अच्छा बड़ा ट्रेड होगा, बट अभी थोड़ा सा हम इसके लिए वेट करेंगे। बाकी गोल्ड और सिल्वर में अभी कोई ट्रेड वेट कुछ नहीं है, सो हम इसे आज जो है स्किप करते हैं। कमोडिटी सेक्शन जो है वो हम ले चुके हैं। अब आते हैं इथेरियम और बिटकॉइन पे। थोड़ा मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट अब क्रिप्टो में आ रहा है वापस से, क्योंकि जो टाइमलाइन है मैंने आपको जो दिया हुआ है, दैट टाइमलाइन इज कमिंग। सो आज क्या है? आज है 12, कल है गुरु पूर्णिमा 13th, एंड देन वी आर इन सम वेरी स्ट्रॉन्ग टाइम जोन ऑन द इन द क्रिप्टो मार्केट्स। सो लेट अस सी क्या होता है। एंड एज ऑफ नाउ तो कोई ट्रेड वेट कुछ है नहीं, वी आर जस्ट वेटिंग फॉर 18th जुलाई, दैट टाइम वी विल सी, ठीक है। सो दैट्स इट, दैट्स ऑल ऑन दी अदर एसेट क्लासेस फ्रंट। अब आ जाते हैं हमारे
निफ्टी और बैंक निफ्टी पे. सो लेट्स टॉक अबाउट दीज थिंग्स. एंड जो लोग अभी जुड़े हैं सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग. चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें. एंड लेट्स टॉक अबाउट निफ्टी. सो बहुत ही सिंपल डे था, मतलब मैं क्या बताऊं, इससे सिंपल डे कुछ नहीं हो सकता. कल जो है हमने डिस्कशन कर लिया था कि डेली चार्ट को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए कि क्यों यहाँ पे सारे लॉन्ग्स को कट कर देना चाहिए. दूसरी बात कि थोड़ा सा बेरिश हो जाओ. ओके, थोड़ा सा बेरिश यानी इंट्रा डे आपको शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली मिलेगा. इनफैक्ट आपको दोनों साइड के ट्रेड्स मिलेंगे. कल मुझे अच्छे से याद है, आई हैड एक्सप्लेन दैट थिंग कि इंट्रा डे मार्केट नीचे जाएगा, फिर इंट्रा डे ऊपर आएगा, फिर मार्केट नीचे जाएगा. यू विल गेट मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज. सो लुक एट दिस वाज द रेजिस्टेंस. ओके, ये पूरा रेजिस्टेंस था एंड दैट इज व्हाई वी आर शॉर्ट इन द मार्केट. सो आज की इंट्राडे एक्टिविटी भी अगर आप देखेंगे तो इट वाज वेरी सिंपल. सी सबसे पहले तो दोस्तों गैप डाउन ओपनिंग. सो इफ यू हैव अटेंडेड एनी ऑफ माय ट्रेनिंग, so here we talk about the gap theory, like how to trade these gaps using price action and the technicals. ठीक है, तो गैप अपने आप में कोई मेथड नहीं है, बट टेक्निकल से हमें जो है चार्ट का ट्रेंड और कॉन्टेक्स्ट समझ में आता है, गैप से हमें उसकी दिशा समझ में आती है, और प्राइस एक्शन से कैसे ट्रेड लेना है वो समझ में आता है. सो इफ यू कंबाइन ऑल द थ्री, द गैप सजेस्टेड यू राइट इन द ओपनिंग दैट देयर इज अ साइन ऑफ वीकनेस. और हम कल से अपना व्यू जो है बेरिश साइड में एक बना के बैठे थे, राइट. सो if market is opening gap down and if you are bearish, that is a validation that your view is correct in the market. Now उसके बाद जो है ना बहुत ही अच्छी चीज हुई इस चार्ट पे. It started to make a rising wedge structure like this, a small rising wedge structure, and then it broke below the structure. Okay, without filling the gap. बस ये जो संकेत था, ये जो मैसेज था, that was enough for me to become bearish for entire day. मैंने सुबह मैसेज भी किया कि आज का जो बायस है वो नेगेटिव साइड में है. कोई भी उछाल आती है सीधे इसे जो है हैमर करना है, चाहे निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो. कोई टेंशन किसी चीज की लेने की जरूरत नहीं है. रेफरेंस के लिए प्रीवियस डे हाई जो है ये इसको बिंदास यूज करो एंड जस्ट गो ऑन शॉर्टिंग. सो एक ड्राइव यहाँ पे आया अराउंड 16,080 16,100 के पास. देन देर वॉज वन गुड अटेम्प्ट, बट अगेन कोई फायदा नहीं है इस अटेम्प्ट का. एंड देन देर वॉज द कंप्लीट सेल ऑफ इन द लास्ट 1 आवर और सो. सो निफ्टी में बहुत ही सिंपल डे था आज के दिन. मॉब लेवल ऊपर ही इसलिए मैंने दिया था ताकि कोई भी पुल बैक अगर सेकेंड हाफ में आए तो उसे मॉब लेवल जो है रोक लेगा एंड यू विल गेट अ चांस टू शॉर्ट द निफ्टी. So I think सिंपल डे था, ये हो चुका है. अब बात करते हैं कि कल की क्या सिचुएशन है. सो फॉर टुमारोज सेशन अगेन द बायस इज नेगेटिव, बट यू विल गेट बोथ साइड ट्रेड. ओके, सो जैसा मैं कह रहा हूँ, अच्छा ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि बोथ साइड ट्रेड मिलेगा, बिकॉज इफ यू लुक ऑन द डेली चार्ट, आई हैव सेड दैट आई एम एक्सपेक्टिंग अ मूव लाइक दिस, जहां पे मार्केट थोड़ा करेक्शन में है, बट it is a part of a bullish move. So I'm expecting a similar type of a move. Okay, so market can move lower, but it will be part of a bullish structure. So that is why we are not overly bearish as such. We are just trading the long and short of it for next maybe 1 or 2 days, and then again फिर जो है हम most probably bullish हो जाएंगे. ठीक है. So now uh, we have a resistance at 16,120 thereabouts. So कल का जो मॉब लेवल होगा दोस्तों वो आज का ब्रेकडाउन एरिया है. सो 16,125, that will be the mob level. So I am considering this entire patch as a very strong resistance now because we have broken below that, right? So on any up move this should offer resistance. So for any kind of a shorting trade for intraday, you can use this high, today's high, as a stop loss, right? You can use this level as a stop loss, or if you want to play a little more safe, you can use this level as a stop loss for any kind of shorting. And downside targets जो है इस मार्केट में 16,000 का पहला टारगेट है, एंड देन 15,925 is the second target. Now if tomorrow market opens gap up and above the mob level, then scenario number one, watch out for a what? Watch out for a failure. Failure कैसे होगा? Watch out for a 16,200 gap filling,
16,200 गैप फिलिंग एंड देन अ फेलियर, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है, उसके बाद अगर फेलियर का मतलब है कि उसके नीचे फिर प्राइस अगर ट्रेड करने लगता है, वी वैप के नीचे ट्रेड करने लगता है, सो दैट इज अ मैसेज दैट प्रोबेबली द मार्केट इज नॉट विलिंग टू गो हायर. It tried to take out today's candle high, but it did not sustain, and that's why it will come back and retest today's bottom. ठीक है ना? ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि मार्केट हमेशा जब ऐसे थोड़े कंजेस्टेड फेज में जाता है तो यू नीड टू बी वेरी श्योर अबाउट व्हाट द मार्केट इज डूइंग. सो ये सिनेरियो है इन केस ऑफ अ गैप अप अबव मॉब लेवल. ये सिनारियो है तो हम लॉन्ग कर सकते हैं. ओके, अगर आप लॉन्ग करोगे तो आप इस स्विंग को अपना स्टॉप लॉस कंसीडर करना, इसको मत करना, ये बड़ा हो जाएगा. ये दिस इज फाइन इनफ एंड राइट टिल 16,200. एंड वहां पे आप देखो, अगर कोई भी वीकनेस आपको दिखता है तो लॉन्ग से निकल जाओ एंड देन वेट पेशेंटली, लेट मार्केट गो बिलो टुडेज हाई एंड देन यू कैन डेफिनेटली शॉर्ट फॉर गैप फिलिंग. ठीक है, तो ये एक सिचुएशन है. दूसरा पॉसिबल ट्रेड ये है कि अगर मार्केट फ्लैटिश खुलता है, फ्लैटिश मार्केट खुलता है तो मॉब लेवल के हिसाब से काम करेंगे. अगर मार्केट कल गैप डाउन खुलता है तो मॉब लेवल से काफी दूर मार्केट खुल जाएगा. इन दैट केस अवॉइड शॉर्टिंग फ्रेश, लेट द मार्केट गो. जैसे क्रिकेट खेलते हैं तो कुछ बॉल्स हम जैसे छोड़ देते हैं, राइट? तो जाने दो उसको, बिकॉज इफ यू ट्राई टू चेज लोअर एंड इस टाइप की कोई मूव आएगी तो आप फिर फंस जाओगे. सो यू कैन लेट इट गो. और व्हाट यू कैन डू इज ORB, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट, अगर आपको आता है तो आप ये कर सकते हो. एंड गैप के ऊपर का आप स्टॉप लॉस रख सकते हो, गैप के ऊपर का स्टॉप लॉस रख सकते हो. एंड देन राइड टिल 16,000 एंड 15,925 एज अ टू टारगेट्स. ठीक है, 16,200 के ऊपर यदि बाजार जाता है तो in that case market can become actually very bullish. Okay, so in that case market can do market can simply take out this high also. Okay, so 16,295 yani 16,300 becomes the next logical target. Okay, so that's it. दो तीन ये situations हैं. एंड अगेन आई एम प्रीटी श्योर कल भी मार्केट जो है डाउन अप डाउन इस टाइप के चार लेग्स कल देगा, depending on where it starts first. So if it is going down first, then one more up move and then a sell off probably. And if it is up, then a down move and then up. ये भी काफी high probability है. So interesting है. Price action traders के लिए कल दोनों opportunities है. So that's all on the Nifty front. If I just uh, show you the profile and the VWAP structure, so I'm expecting these levels to be tested somewhere 15,961 on the Nifty futures. So that is the target. So this is the proper breakdown actually. So this is the proper breakdown. Have left a unfilled gap. So very nice actually structure. So this ideally gets completed here. This is the bare minimum. Okay, and also if we look at the cumulative volume since where, if we look at the cumulative volume since the bottom was made, so 15,200 अगर यहाँ से हम फ्यूचर्स के चार्ट को अगर हम देखेंगे, so you can see the cumulative volume is being shown here on this side of the screen, and we have broken the second highest volume. So आज का जो हाई था दोस्तों, second highest volume है और highest है यहाँ पे. Highest as of now it is placed at 15,785. मैं लमसम 8,000 लिख देता हूँ. And then this is the whole bunch of area which is a very thinly traded area. Okay, so 850 is a major support. I don't think that will come इतना आसानी से तो नहीं आएगा, but yeah, these levels, these two, 15,950, that is very likely to come over here, and probably then again some bounce, and then we'll see क्या स्ट्रक्चर बनता है. अगर वापस से रेजिस्टेंस लेके गिरना शुरू करता है तो आप समझ जाओ कि 15,800 आ रहा है. इट विल फिल अप दिस वैक्यूम एरिया, एंड फिर उसके बाद मार्केट जिस दिशा में जाएगा, मार्केट वहां का 500-700 पॉइंट का ट्रेंड हो जाएगा. मार्केट ऊपर तो फिर बुलिश, मार्केट नीचे तो बेरिश. ठीक है, एंड from a positional perspective, I don't think market is going to go below 15,900 unless something new data or new news, something like that comes. ठीक है, so that's the detailed explanation of the निफ्टी एनालिसिस. बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं तो
बहुत ज़बरदस्त आज का जो है बैंक निफ्टी ट्रेडिंग था, बहुत ही शानदार ये ट्रेडिंग था बैंक निफ्टी में। वाई? बिकॉज आज का जो मॉब लेवल था वो ब्रीच होने के पहले ही मैंने ग्रुप में अपडेट कर दिया था कि आई एम बेरिश ऑन बोथ द इंडाइसेस, स्पेशली बैंक निफ्टी, एंड एनी रैली दैट कम्स इट मस्ट बी सोल्ड ऑफ। सो एक मॉर्निंग अपडेट के बाद देयर वाज वन सेल ऑफ हियर which happened. Okay, it took some support, and then it did a very smart thing. It tried to go and take out the days high, but वो हुआ नहीं, फ्यूचर्स में हुआ, इसमें स्पॉट में नहीं हुआ। एंड दिस इज द वेरी नाइस बेरिश पिन बार, एंड देयर आफ्टर huge selling, and thereafter finally breaking below the last bastion of support. So these were the last supports and it has broken. बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार ये जो है पूरा शॉर्ट मूव था। नाउ after today's move, what is most likely to happen is a continuation. If you see very smartly, bank nifty is making a kind of a head and shoulder pattern, और multiple heads है, multiple head and shoulder की structure है। इस समय में इसमें बहुत ज़्यादा I don't want to read too much into this, but I'm keeping this at the back of my mind. Why? Because if you look at the weekly chart which is here, अगर हम weekly chart को अगर देखते हैं, तो दोस्तों हम ये देखते हैं कि ये वीकली ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस पे है, इट इज हियर, राइट। एंड लास्ट टाइम यहाँ से एक बड़ी गिरावट हुई थी। नाउ आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी बड़ी गिरावट लाइक दिस, बट some correction till 34,400 is not ruled out. Okay, some correction till 34,000 and 34,400 is not ruled out. So that is why we have to be extremely careful. Now that is one thing. Second thing ये है कि जो आपका डेली चार्ट है, अगर आप लास्ट 3 days का प्राइस एक्शन अगर आप निकालेंगे, so you will see that this is what I call as a तुषार कपूर पैटर्न। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि इसमें IOI है। ठीक है, सो ये जो पैटर्न है, दिस इज अ काइंड ऑफ अ रिवर्सल पैटर्न। So if this pattern is correct and this pattern is occurring on the weekly chart resistance, number one, number two, on the daily chart ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस जहां से लास्ट सेल ऑफ हुआ था, आप देख सकते हैं। ठीक है, एंड नंबर थ्री, दिस इज ऑल्सो दी 233 मूविंग एवरेज। ओके, सो देर आर मल्टीपल रेजिस्टेंसेस ओवर हियर, एंड हमने लास्ट टाइम जो पूरी बुलिश मूव जो हमने प्ले किया था, इसका टारगेट ही था 35,800 देयर अबाउट्स, एंड we made high of I think 35,600 or 500 somewhere over there. So this is a trouble area फॉर बैंक निफ्टी, सो वी शुड बी केयरफुल। इसे जो है थोड़ा सा सीरियसली लेना चाहिए, बिकॉज कोई भी अगर गड़बड़ यहाँ पे सिचुएशन में आती है तो सबसे पहले बैंक निफ्टी गिर जाएगा आपका 34,400, 34,000। ये तो एक बात है। दूसरी बात कि अगर गिरावट थोड़ी थोड़ा एग्रेसिव अगर फॉल है, तो फिर ये 33,800, दिस एंटायर कंजेशन एरिया, that can also come. Okay, so we have to be extremely careful. So that is why till we are not breaking higher, breaking this candle high, I'm maintaining my bearish bias for a target of say 34,800, 34,400 and 34,000. So अब हम कैसे प्ले करेंगे, कल कैसे प्ले करेंगे? Now what is the most interesting part of today's uh, इंट्राडे प्राइस एक्टिविटी, और जो मैंने जो कमेंट्री दिया था ग्रुप में, the best part was the presence of this big candle. Okay, so if you apply little common sense, you will see that this single candle was responsible for holding so many candles. ठीक है, तो अब आप ऐसे सोचो कि एक कैंडल के भरोसे इतने लोग खड़े हैं यहाँ पे, तो ये बेचारा कब तक सपोर्ट देगा, राइट? इसने तो पूरी कोशिश की हर हर समय सपोर्ट देने देने के लिए, बट कभी ना कभी तो ये ब्रेक होगा। दैट गॉट ब्रोकन, दैट्स इट, दैट वाज द एंड ऑफ इट, राइट? सो बिकॉज दिस कैंडल वाज देयर एंड वी हैड अ वेरी नाइस गैप डाउन ओपनिंग, इसीलिए मैं इस पे बेरिश था कि कोई भी रैली आता है सेल करो, क्योंकि जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर है उसे पता है कि इस मार्केट का बेस जो है ना बहुत ही हल्का है। सो एनी पुश डाउन इफेक्ट विल ट्रिगर द सेल ऑफ। सो दिस वाज द लॉजिक। चलिए अब देखते हैं दोस्तों कि कल क्या सिचुएशन है। सो एज वी कैन सी इन दिस चार्ट,
आई नो जो ब्रेकडाउन एरिया है 35,300 का फ्यूचर्स में, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है एंड दैट ऑटोमेटिकली बिकम्स अवर मेक और ब्रेक लेवल फॉर टुमारो. सो स्पॉट पे 35,200 300 these this 100 point area is our make or break level for tomorrow. 35,000, let me write 250. Okay, so it's a 100 point zone. I'm just writing 35,250. Below that it is bearish very very clearly. 34,850 पहला टारगेट है, 34,440 दूसरा टारगेट है. अगर मॉब लेवल के ऊपर जाता है, ठीक है, अगर मॉब लेवल के ऊपर जाता है तो डायरेक्टली बुलिश नहीं होना है, थोड़ा सा ऑब्जर्व करना, देखना कि ये इस तरीके से सपोर्ट लेता है कि नहीं लेता है. ओके, बिकॉज एज आई सेड ये मार्केट जो है एक्चुअल रेजिस्टेंस ये है इसका. सो व्हाट इट कैन डू इज इट कैन make you feel that it's bullish and entice you into a long trade, thereby still maintaining this like like a resistance. Okay, and then ट्रिगर द फॉल. ठीक है, सो इसीलिए मॉब लेवल के ऊपर बुलिश है, बट ऑब्जर्व करना इस तरीके का बिहेवियर. अगर इस तरीके का बिहेवियर है, वी वैप के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो फिर लॉन्ग कर सकते हो. आज का बॉटम तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा, बट यू कैन कीप 35,100 एज अ स्टॉप लॉस एंड ट्राई टू सी वेयर इट कैन गो. 35,440 वगैरह जो है, दैट कुड बी अ गुड प्रॉफिट बुकिंग जोन. 35,440. All right, so pretty much that's all. अगर कल गैप डाउन होगा तो I think it will continue and hit 34,850 first. Then there must be a bounce, and then one more round of a sell-off can come tomorrow. If there is a gap up opening, that should be the best thing for bears, because आपको फिर मॉब लेवल के आसपास जो है शॉर्टिंग करने का मौका मिलेगा, and that will be a good thing. ठीक है, so that's all from my side. I have covered in complete detail इंडेक्स एनालिसिस, निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेडिंग, सारी चीज़ों को हम डिस्कस कर चुके हैं. वी हैव ऑल्सो कवर्ड कमोडिटीज, फॉरेक्स, एवरीथिंग. सो डू शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करिए, कमेंट करिए, एंड yeah, and we can take some stock queries, not more, but at least हम कुछ stocks ले सकते हैं. आज का पूरा जो heat map है, it is very negative, right? And almost all these stocks, they have fallen badly. So it was actually a proper heavy sell off. देखा जाए तो sectors, maybe almost all the sectors were in red, falling by 1% each. So this was a good sell off actually. All right. Uh, I will try to take 10 stock queries. Let me see. First query is Rail टेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. और दोस्तों एक बार मैं वापस रिमाइंड कर देता हूँ कि नेक्स्ट ट्रेनिंग इज शेड्यूल्ड ऑन August 13th and 14th. ओके, सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन व्हाट्सएप एंड यू कैन ज्वाइन. चार्जेस आर रिवाइज्ड. थोड़ा कंटेंट में भी रिवीजन हुआ है, थोड़ा नहीं, इनफैक्ट काफ़ी रिवीजन हुआ इन द वे things were presented and all those things. So you can join as soon as possible. All right. सो रेल टेल देखो टोटली बेरिश काउंटर है, मैसिवली बेरिश काउंटर है. सो इट इज नो स्कोप, नो होप. एनी रैली दैट कम्स विल बी लिमिटेड टिल 110 रुपीज. इसके ऊपर मैं इसे बिल्कुल भी नहीं देख रहा हूँ. और ये स्टॉक सीजनैलिटी वाला स्टॉक है, तो ये हम समवेयर अराउंड दिसंबर में इस स्टॉक पे हमारा इंटरेस्ट आएगा, अभी नहीं. दीपक नाइट्राइट या रोज इस स्टॉक पे कोई पूछता है, एंड सेम वही रिप्लाई मेरा होता है कि अगर अभी लॉन्ग है तो 1550 का एक स्टॉप लॉस रखिए, एंड अभी टारगेट मैंने दिया है 2020, विच इज दिस एरिया ओवर हियर. यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना है, एंड इन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स हम वापस से अगर कोई गिरावट अगर होगा तो फिर हम बाय करेंगे. इन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स we can make a falling wedge pattern, okay, and then rally in this particular fashion. ठीक है, सो हमारा टारगेट हो जाएगा न्यू ऑल टाइम हाई. सो वी विल सी व्हाट हैपेंस दैट टाइम. अभी हम इस स्ट्रक्चर में प्ले कर रहे हैं. सो यहाँ पे हमें प्रॉफिट बुकिंग करना है 2020 2022 समवेयर ओवर देयर, वी विल सी.
ठीक है, सो ये व्यू है। और स्टॉप लॉस अभी आप नीचे का जो है 1600 रुपए को आप स्टॉप लॉस अभी रख सकते हैं। एच डी एफ सी, सी एच डी एफ सी, एच डी एफ सी बैंक वगैरह थर्ड क्लास हैं सब, इनमें कुछ नहीं रखा है। ठीक है, कितने दिनों से, महीनों से मैं अब ऑलमोस्ट लिटरली इट हैज बीन फ्यू मंथ्स नाउ आफ्टर दैट मर्जर न्यूज आई हैव बीन टेलिंग पीपल टू प्लीज स्टे असाइड, बट नो, ओल्ड लव डाई हार्ड। सो यहाँ पे ये सिचुएशन है कि कुछ रखा नहीं है स्टॉक में, मे बी 2400 आ जाए मे बी। ठीक है, उससे ज़्यादा ऊपर तो मैं अभी बिल्कुल भी नहीं देख रहा हूँ मैं। सी ऑल दीज काउंटर्स इफ यू सी केयरफुली दे आर ऑल मेस्ड अप। इनको रिपेयर होने में ना, दीज चार्ट्स दे नीड लॉट ऑफ टाइम, एटलीस्ट 2-4 महीने लगेंगे इन सारे चार्ट्स को रिपेयर होने में। द डैमेज इज सच, सो द प्राइस वाइज डैमेज इज नॉट मच, बट जो स्ट्रक्चर है ना, इसे रिपेयर होने में काफी समय लगेंगे, 2-4 महीने और लगेंगे, उसके बाद हो सकता है बहुत जबरदस्त तेजी आए इन स्टॉक्स में। प्राज इंडस्ट्रीज, नेक्स्ट क्वेरी है दोस्तों, प्राज इंडस्ट्रीज। सो all those who have bought crude oil, it is trading at your cost, it is 11:15, so you can wind up the trade at cost, just exit it, and we'll see tomorrow. Let me message also. Done. ठीक है, प्राज इंडस्ट्रीज, तो देखो प्राज जो है ये बुलिश है इस समय, और मेरे ख्याल से स्टॉक जो है थोड़ा और ऊपर 400 रुपए तक जाना चाहिए। 400 अगर चला गया ना, देन आई थिंक इट विल डेफिनेटली डू 440। अभी द ओनली थिंग व्हाट यू कैन डू इज जस्ट पुट योर स्टॉप लॉस एट 343 एंड लेट इट राइड, गिव इट सम टाइम। ठीक है, नेशनल एल्यूमिनियम, नेशनल एल्यूमिनियम, लेट मी सी। देखो नेशनल एल्यूमिनियम, नाल्को वगैरह जो है बहुत बुरी तरीके से पिट चुके हैं ऑल दीज काउंटर्स, एंड यू नो ये ऐसे स्टॉक पे, ऐसे चार्ट्स पे मेरा कोई बुलिश बायस होता ही नहीं है। सो एनी रे, बिकॉज आई हैव सीन ओवर so many years, over a period of, once the stock is broken, it means broken. Okay, क्योंकि उसका सिंपल लॉजिक है कि जिस इन्वेस्टर ने अगर उस स्टॉक से एग्जिट किया है, ही नोज मच मोर देन ऑल ऑफ अस। ओके, सो देयर शुड बी समथिंग सब्सटेंशियल, तभी तो उसने एग्जिट किया है। सो दीज स्टॉक्स इफ यू सी, दे हैव पीक्ड इन अ वेरी वेरी पेक्यूलियर मैनर। ओके, ऐसे ही टॉप बनते हैं, एक बड़ा फर्स्ट बाइंग क्लाइमेक्स होगा, देन यू हैव 1 2 3, इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ राइजिंग वेज बोल लो, हेड एंड शोल्डर बोल लो, फेलियर बोल लो। ठीक है, दैट्स इट, खत्म। और उसके बाद गैप डाउन से क्रैश। सो इस स्टॉक में ऐसे एज सच कोई होप नहीं है। अगर मार्केट बहुत तेजी में रहा तो मे बी 88 रुपीज तक जा सकता है अधिक से अधिक। ओके, ऑल दीज स्टॉक्स दे हैव broken down very very badly, so maybe 88। केईसी इंटरनेशनल, केईसी इंटरनेशनल पे अगली क्वेरी है। ओके, fine. So as of now, yeah, the stock is good. I like the structure, but it is still not crossing that resistance which we had spoken. So I remember that I had asked you to do a follow up after a few days, but still we are at the same place, right? So nothing. Okay. So if you are holding this stock, what I would suggest is you right now you keep a stop loss of say 375. That should suffice. Okay, and once it takes out the 420 level, then it should start to move higher, 450 thereabouts, that level should come. There is a gap also at 450 etc. ठीक है, so keep these things in mind, and we can again do a follow up after few days. Next query I can see is what, globe globus spirits limited. Okay, so again, this is a dud stock, long term
टॉप हो चुका है, कोई भविष्य नहीं है इस स्टॉक का. एनी रैली दैट कम्स इज लिमिटेड टू 1100 rupees. Very very badly broken. Okay, these kind of stocks, Globus and all, these are just pump and dump schemes है. आप देखो यहाँ पे, these are just pump and dump. इसके बाद कुछ हुआ ही नहीं है स्टॉक में. एंड मैसिव हेड एंड शोल्डर बना के प्रमोटर ने जो है माल सबको चिपका दिया. सो दीज आर टिपिकल typical stocks. So any rally that comes, it will be limited till 1100. Okay, if it crosses say 1150, 1200, probably आप थोड़ा सा चांस ले सकते हो till 1350. बट मेरे ख्याल से आपका कॉस्ट निकल जाए, निकल जाओ. These you can't trust on these stocks. बजाज फाइनेंस की बात कर लेते हैं एक बार. बजाज फाइनेंस, तो बजाज फाइनेंस में मैंने स्पेसिफिकली कैश में ट्रेड करने को इसीलिए कहा था कि मार्केट अगर बीच में पुल बैक देगा तो आप जो है फंसोगे नहीं. सो वेरी नाइसली इट इज होल्डिंग अप, ट्राइंग इट्स बेस्ट. तो इसमें बने रहो. सेम स्टॉप लॉस में रखूंगा. अभी जो एंट्री है ना, ट्रेल टू कॉस्ट एंट्री आपकी कहाँ थी? एंट्री है 5300 के आसपास. सो ट्रेल टू कॉस्ट करो. पहले ट्रेल टू ये बॉटम था, अब ट्रेल टू कॉस्ट है. देयर इज नथिंग टू लूज ऑन दिस स्टॉक. हाँ, ये जो M2M प्रॉफिट है दैट इज एट स्टेक, बट बने रहो. आई थिंक दिस स्टॉक विल डू मच मच हाइयर. सो मेरा जो 6700 का टारगेट है, आई वुड लाइक टू प्ले फॉर दैट. सो टिल the entry is not broken, I think 6700 will come in this stock. फर्स्ट टारगेट होगा 6400 500. अगर वो निकल गया तो फिर डेफिनेटली 6700 800. ठीक है, यहाँ पे यू कैन सी इट्स एट अ वेरी गुड सपोर्ट. 5760 का बहुत शानदार सपोर्ट है और ये फ्लैगिश पैटर्न बना रहा है. जिस दिन निकल गया ना 6000 के ऊपर, बस कोई नहीं रोक पाएगा. ए डब्ल्यू एल पे आपका क्या व्यू है? ठीक है, सो ए डब्ल्यू एल जो है, लेट मी सी. सो ए डब्ल्यू एल जो है, ये देखो तेजी में है, इसे बाय कर लो. बाय अगर अगर बाय साइड में है तो ठीक है. वॉट एवर इट इज, कीप स्टॉप लॉस ऑफ 530 रुपीज. दैट्स इट. जब तक ये 530 ब्रेक नहीं करता है, आई थिंक ये स्टॉक वापस से 800 900 कहीं भी जा सकता है. ठीक है, इनका तो खुद का ही अब कंट्री है ना, तो ये कहीं भी जा सकते हैं. ठीक है, सो जस्ट ट्रेल करते रहना. ट्रेल अब कैसे करोगे वो सब आप देख लो. मेरे ख्याल से स्टॉक बहुत बुलिश है. ये ऐसा स्टॉक है कि इसमें बुलिश है कि नहीं वो नहीं सोचना है. स्टॉप लॉस लगाओ, बाकी छोड़ दो. न्यू हाई जिस दिन आएगा तब बात करेंगे. सेल अगेन, सेल, नैल्को, टाटा स्टील, वेदांता, ये वो काउंटर्स हैं जिनमें भारत का ट्रेडर जो है फंसा हुआ है. क्यों फंसा हुआ है? क्योंकि लाइव सेशन नहीं देखते. 82 रुपीज देखो, अधिक से अधिक गया तो 80 रुपया. दिस स्टॉक इज टोटली वॉज ब्रोकन. ऐसे स्टॉक जो है ना, सिर्फ एक हाई मोमेंटम वाले बुलिश फेज में चलते हैं. और ये हर 2-3 साल में एक ऐसा कोई फेज आता है, दे रैली एंड दे कैच पीपल्स अटेंशन. और सब लोग जो है ऊपर ऊपर में फंस जाते हैं और कई महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए फंस जाते हैं. सेम वही स्टोरी मैं देख रहा हूँ पिछले 15 साल से. सो इस स्टॉक में 80 रुपया अधिक से अधिक मुझे लग रहा है कि ये जा सकता है, उसके ऊपर नहीं. ठीक है, HDFC AMC पे क्वेरी है. HDFC AMC पे क्वेरी, HDFC AMC. So HDFC AMC again, that same bearish counter from the HDFC group. कोई भविष्य नहीं है, कुछ नहीं है. 2100 रुपया जो है जा सकता है अधिक से अधिक. ट्रेल टू योर बॉटम, ट्रेल टू द बॉटम, होप फॉर द बेस्ट. 2100 लेवल जब आएगा तो एक बार हम ये कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे. DLF पे एक क्वेरी है. DLF, let us take DLF. So DLF, it is my perma bear counter, so इसमें मैं लॉन्ग की एडवाइस कभी नहीं देता. एंड फिलहाल द स्टॉक हैज टू नेगोशिएट 360 रुपीज. सो दैट इज अ मैसिव रेजिस्टेंस राइट नाउ. सो इफ यू आर लॉन्ग, यू शुड बुक सम हियर. एंड फिर कोई डिप आता है 327 330 तो वापस बाय कर सकते हो. एंड यू कैन कीप 300 एज अ स्टॉप लॉस. नेक्स्ट राउंड में मे बी हो सकता है 370 वगैरह जाए. ओके, possibly it can make inverse head and shoulder also next time. So that's the only view I can give in this stock. See, none of the charts are looking fascinating. It means that a lot of time correction is going to happen in many stocks.
ACC, ठीक है, ACC लिमिटेड। ACC जो है देखो, इस समय ACC में एनी साइड मूव आ सकता है। इट इज सिंपली सिटिंग एट द मिड पोर्शन ऑफ अ बिग रेंज, ठीक है। सो एनी साइड, इट्स योर गेस इज एज गुड एज माइन. What I would suggest is, maybe if you are long, keep the stop loss as 2050 and hope for the best. Since the market is bullish, and after a few days of correction again market can become bullish, it might lift off the stock also. What I can do is I can have a look at the higher time frame chart to get some clues. But again, if you see, nothing. दोनों डोजी कैंडल है बॉस. सो जस्ट कीप योर स्टॉप लॉस, होप फॉर द बेस्ट. अगर ये ऊपर चल गया तो श्योरली आपका 2400 का टारगेट डेफिनेटली आएगा. इट्स अ बाइनरी थिंग, ठीक है. एंड प्लीज डोंट स्पैम, प्लीज डोंट मैसेज again and again for that same stock. Let us take couple of more queries. SRF, देखो SRF ऑलरेडी बुलिश है, बहुत पहले भी मैं इस पे दे चुका हूँ कॉल. एंड SRF में अभी और तेजी आनी बाकी है. SRF में अगर आप बायर हो तो एक ही मेरा व्यू है SRF में, दैट होल्ड द 2000 रुपीज स्टॉप लॉस. ओके, इसके नीचे गया तो एग्जिट कर दो. एंड फर्स्ट टारगेट इज 2300, एंड देन 2100, and then 2400 or maybe 2500 also. So we will go with the flow. As of now I believe ये SRF में most likely this is going to happen. 2300, 2100, 24. अगर ये 24 आता है तो समझ जाओ कि फिर वो 24 नहीं, फिर वो जाएगा बहुत ऊपर. तो हम फिर उसे राइड करेंगे एटलीस्ट टिल 2600 के आसपास. यू कैन टेक अ स्नैपशॉट ऑफ दिस, मे बी यूजफुल हो जाए फ्यूचर में. TCS, तो TCS में आपने क्यों ऊपर बाई किया 2300 वगैरह पे? दैट वाज नॉट द प्लेस टू बाय, दैट वाज द प्लेस टू एग्जिट योर लॉन्ग ट्रेड्स जो पहले के अटके हैं, ठीक है. नहीं, आपने कहाँ बाई किया? 3200 पे बाई किया. हाँ सॉरी, मैं 2300 कह रहा हूँ. सो 3200 पे TCS जो है बिल्कुल बाय नहीं था दोस्त. ओके, TCS इज इन अ, TCS, Infosys, these are all in a very big bear market. So what you can do is right now, if any up move comes, you can exit at your cost. और अर्निंग्स के पहले सट्टा खेलना बंद कर दो, सेहत के लिए अच्छा नहीं है. या तो पहले सीखो और फिर सट्टा खेलो, नहीं आता है तो फिर सट्टा मत खेलो, ठीक है. सट्टा भी खेलना है, प्रॉफिट भी चाहिए, सारी चीज़ें नहीं होती. बैंक ऑफ बड़ौदा, सी बैंक ऑफ बड़ौदा PSU बैंक है, और आज SBI वगैरह में थोड़ा सा प्रेशर है. सी बैंक ऑफ बड़ौदा इज लुकिंग क्वाइट गुड. सो अगर पहले से बाइंग पोजीशन है, नीचे की बाइंग पोजीशन है, तो ठीक है, ट्रेल एट कॉस्ट कर सकते हो. 96 रुपीज 95 एक अच्छा है. एंड यू कैन राइड एटलीस्ट टिल 118. ओके, एंड सरप्राइजिंगली ये इस समय जो है काफ़ी बेहतरीन चार्ट लग रहा है ये. ओके, सो यू कैन कीप, नो प्रॉब्लम. माइंड ट्री, माइंड ट्री, सी माइंड ट्री दोस्तों, IT पैक अगेन आप देख लो, सबको IT पैक जो है सब फंसे पड़े हैं. सो माइंड ट्री खत्म भाई, इसकी कहानी. अगर आप लाइव सेशन रोज नहीं देखोगे तो यही होगा. ऑल दीज स्टॉक्स, ऑल दीज स्टॉक्स लिटरली कई महीने पहले सब में बाहर मैं जनता को करा चुका हूँ. सिंपल सी बात है. लुक एट दीज स्पाइक्स. ऐसे वाले चार्ट्स जो है ना, ये कभी सस्टेन ही नहीं कर सकते. ओके, सो अब यहाँ पे ऐसा है कि देखो, इट इज सेटिंग एट अ मैसिव लेवल. अगर लक साथ दिया आपका और एक मूव आ गया तो अच्छी बात है. तो यहाँ पे एक ही चीज आप कर सकते हो कि यू कैन होप फॉर द बेस्ट एंड पॉसिबली कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ से 2600 रुपया, 2600, 2650 वगैरह, एंड होप फॉर द बेस्ट. अगर ये निकल गया, चल पड़ा, तो सबसे पहले 3200 आएगा और फिर 3430. ये दो टारगेट जो है सर्टनली आएंगे इस स्टॉक में. सो ये आपका लॉन्ग टर्म सपोर्ट पे बैठा है. सो टेक अ स्टॉप लॉस, मतलब एक स्टॉप लॉस लगा के चलिए एंड होप फॉर द बेस्ट. दैट शुड बी द वाइज डिसीजन. Okay, so we are approaching the 1 hour time limit. Let me take a last query. HCL Tech, देखो अगेन IT, सब IT में फंस गए हैं.
everybody is caught in IT. So why should HCL Tech be any different? So it is not different, and yes, it is continuing the bearish move. So gone. So it's all bearish. अभी इसमें कोई भी trade नहीं है. Next query है Reliance Industries. So maintain roughly 2300 as a stop loss. Next query है M&M, Mahindra and Mahindra. So let me see M&M. I think it's just Mahindra and Mahindra, Mahindra M underscore M. So Mahindra and Mahindra, very very powerful, ऑटो स्टॉक. इसके बारे में जो है हम थोड़े हफ्ते पहले डिस्कस कर चुके थे कि कैसे इट विल एक्सप्लोड, दैट टीवीएस देन आइशर, सो ऑटोज पे जो है नजर तो थी हमारी. नाउ अब इस स्टॉक को चेज करना बंद कर देना, ठीक है. सो डोंट चेज दिस स्टॉक. आई कैन क्लियरली सी सम एग्जॉशन कमिंग इन. और शॉर्ट नहीं, इसका ये मतलब नहीं होता कि शॉर्ट कर दोगे, नो, चेज मत करो. सो इफ यू आर लॉन्ग देन जस्ट बुक आउट फॉर नाउ. एंड ये फर्स्ट एक एक लेग है, अब दूसरे भी लेग्स जो है मिलेंगे. सो फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू इज नंबर वन, आइडेंटिफाई अ स्टॉक विच इज स्ट्रॉन्ग, विच इज अ लीडरशिप स्टॉक राइट नाउ इन द मार्केट. सो लीडरशिप स्टॉक में पहली मूव बहुत ही फास्ट होती है, एंड देन यू कैन वेट फॉर द सेकंड करेक्शन एंड देन फॉर द कंटिन्यूएशन. तो इस स्टॉक में पहली मूव जो है ये हो रही है, और प्रॉफिट बुकिंग करो. एंड लेटर ऑन वी विल सी फॉर सेकेंडरी मूव्स आल्सो, ठीक है. सो इसमें आप क्या कर सकते हैं, या तो आप ट्रेल कर सकते हैं टू 1070 विच इज द 21 डे EMA, एंड पॉसिबली एक और न्यू हाई बने 1200 के आसपास तो निकल जाइए, या फिर पार्शियल प्रॉफिट बुक कर दो, पार्शियल को ट्रेल कर दो, ठीक है. LNT, लार्सन एंड टू ब्रो, LNT लेते हैं and will wind up. So yeah, so LNT में after a long time we have seen some very big moves. लास्ट वीक का जो वीकली चार्ट बना था वो काफ़ी बढ़िया था. if I could open the last week chart, very nice, bullish candle. So right now, see, it has met its target of reaching the 233 EMA. So definitely profit booking करो. Massive volume है boss, बाहर निकल जाओ फटाफट. And any down move that comes probably near 1560 हम शायद वापस बाय करें. ओके, शायद नहीं, हो सकता है, बहुत हाई चांस है कि हम बाय करेंगे. इट लुक्स वेरी नाइस. सो 1560 पे बाय करेंगे नेक्स्ट टाइम फॉर ब्रीच ऑफ दिस 1730. जो लोग फॉलो कर रहे हैं काफ़ी महीनों से, आपको पता है 1730 ये लेवल जो है मैंने इसी समय मार्क करके रखा हुआ था, एंड इसके ऊपर ही हम लॉन्ग करेंगे. So this move, if comes, it will also make a inverse head and shoulder pattern. Now many stocks, they are showing a possibility of a inverse head and shoulder pattern, which is okay, but it is of a concern also. क्योंकि इसका दो मतलब है कि यदि ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर सब में फटा तो मार्केट बहुत फटेगा, ठीक है, या फिर मार्केट बहुत डह जाएगा. ऑलराइट, सो दिस इज गुड एंड बैड बोथ. फॉर नाउ प्रॉफिट बुकिंग. ऑल राइट, सो विद दिस आई विल वाइंड अप. आज 1 घंटे के ऊपर की लाइव सेशन हो चुकी है दोस्तों. लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें. एंड ऑल दोज हु आर इंटरेस्टेड टू रजिस्टर फॉर द अपकमिंग ट्रेनिंग एंड बिकम अ पार्ट ऑफ द टेलीग्राम ग्रुप, यू शुड डू एज सुन एज पॉसिबल. जितना जल्दी आप ज्वाइन करोगे उतना ही अच्छा आपके लिए ही होगा. थैंक यू सो मच. विश यू ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो सेशन. गुड नाइट, टेक केयर, जय माता दी.